Hello children, welcome back. In Computer Studies Chapter 4, Handling List and Table in HTML. Okay, this is part 2. Now children, in this section we are going to learn about tables. Okay. Now HTML table tag that you can see here in angular bracket defines an HTML table. An HTML table consists of one table element and one or more tr and th and td elements. The tr element defines a table row and the th element defines a table header and td element defines a table cell. Okay, now children, a table represents a tabular data. That means a table which consists of one or several rows. Each row has one or more columns. Table comprised of several core tags. Table, table closing, begin, end of the table. Okay. tr closing, that creates a table row. Fine. Then we have td and td closing, that creates tabular data cell or column. Let's say a table of one row only. In that one row we are having only one tr but we are having 4 to 5 td टेबल डेटा, विच मीन्स एक ही रो में हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 टेबल सेल्स हैं हमारे पास. ओके, इफ़ वी आर हैविंग 5 रोज एंड इन ईच रो वी आर हैविंग 4 TDs, सो दैट मीन्स 5 रो पर हर रो में 4 सेल्स हैं. अंडरस्टूड? टेबल आर losing favor of div and span. Okay, now children, start and end of table as I have explained you in last image. Same way table start with in HTML program जैसे हमने list के लिए शुरू किया था OL या UL. Similarly after in body tag, after head tag gets over, we will start in body tag table beginning, then content of the table. At the end, when the tr, td, th all are over, then after we used to write table closing. Okay, at the end of the before the body tag gets over. Example is given here children, please practice this example. HTML starts, that means starting of the HTML program, then body. हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में we are not writing head section, so it's not necessary every time to write the head section. Directly we can start with. Then in body section h1 my first table, h1 heading है, आपने पढ़ा है 9th में different types of heading. अब p is what? Paragraph tag. My first table is as follows, this line will come. Okay, then we are having table border. टेबल जिसको हमने बॉर्डर दिया है, इट हैज़ द बॉर्डर ओके ऑफ साइज 2. नाउ वी स्टार्ट टेबल. सिर्फ हम टेबल भी दे सकते हैं, बट बॉर्डर इफ़ यू आर नॉट गिविंग, तो टेबल विल कम विदाउट एनी बॉर्डर. ओके, सो tr आफ्टर टेबल बॉर्डर इट हैज़ itself अ टेबल बिगनिंग. नाउ tr दैट मीन्स टेबल रो, यानी फर्स्ट रो. td, अब उस फर्स्ट रो में हमें क्या लिखना है? td, this is row 1 column 1 td closed. Got it? Second td, दूसरी बार td, this is row 1 column 2 td. You can see in output children, एक ही रो में हमने एक ही tr के अंदर we are giving 2 td, that means 2 columns बनेंगे. You can see in this output image. अब एक tr ख़त्म, यानी first row ख़त्म, we are coming on the second row, so we have to close the first row, that is end tag with tr. Now opening the new row for that new tag with tr, new tr tag td, this is row 2 column 2. new tr में हमारी नया सेल. ओके, तो रो 2 column 1 रो 2 column 2, 2 td's ये. You can see in output children. I hope you are understanding because you have already done in 9th standard probably, I think so. Okay, the HTML code shown in code listing 4.6 in last image use table tag with some attribute and component. The first attribute used within table tag itself is a border attribute to print border of pixel size 2. We have given table border is equals to 2, so pixel size 2. The table further defines a row with tr tag.
The table shown in figure 4.9 has two rows, hence two sets of TR tags must be used. I hope you understood, children. Within a row, with the help of TD tag pairs, cell are defined. TD means table data. उसके लिए जो हम cell के अंदर लिखते हैं. The attribute and tags used in this example are discussed later in the chapter. In this chapter, the objective of example is to understand the row and column formation of the table. I hope you understood how the rows are to be created and how the columns are created inside the rows by last example. This arrangement is also known as grid type arrangement. Let us take detailed view of table tags. Children, the table tags and its attributes. Attributes means its features, different types of features of table tag. The first tag that is used to define a table is, पहला tag table define करने के लिए table tag ही होता है. Okay, so the table tag can carry many attributes. Some of them are not much popular nowadays. However, you may use them. The attributes are given here in the list. Align for alignment of the table, right, left, center or whatever. That is justified also. BG color, that is background color. Border, table border. Cell padding means the attribute leaves specified gap between edges of the cell. Cells के बीच में gaps छोड़ता है, so cell padding. Cell spacing means the attribute manage space between each cell of the cell. This we will see in our example, children. Then DIR attribute specify the direction of the text. कौन सी direction से हमको लिखना है. Okay. So frame, the attribute controls the outermost border of the table, that is frame. Rules, the attribute controls the presentation of inner border of the table. Summary, the attribute presents description of the table. पहले हम देखेंगे table border. Already we have studied in last example, children, in last image. Here a border with pixel size 2 is created using the border attribute. So this attribute creates border around the table as well as around each individual cell. Use the attribute with value 0, so no border. अगर हम table सिर्फ देते हैं heading में, beginning of the program में सिर्फ table देते हैं angular bracket table, तो वो कोई भी border नहीं देगा, सिर्फ contents को 4 cell में देगा, but border will not be there, वो visible नहीं होगा. लेकिन हमने अगर कहा border is equals to 4, 2, तो it will give the border around the table contents. Consider HTML code that we have created earlier. So let us modify the value of border attribute by changing the value border attribute shown here. 2 की जगह अगर हम 4 देते हैं table border, तो आप output जब देखोगे and align left, तो you will see the output, you will get that border is more thicker now. Okay, you might have noticed one more attribute we have used in the example given in previous, that is align attribute. Here, did you notice anything? You must not have noticed any change. Try to change the alignment of the table right, left. तो आप देखेंगे कि table की position change हो रही है, alignment change हो रहा है. Try to change the alignment of the table right. Now you may able to notice table is in the, we will see that in the right aligned. Okay, we will see other alignment values later. See, children, on this screen output of the table. Okay, now BG color attribute, very simple to understand. Let us make the table more attractive. Simple, by default जो screen का color है output color, that is white. If we want to give the background color, so we can give our table background. To do this we have to use BG color attribute. The BG color attribute sets the background color for the table. The value of this attribute is either a color name or a 6-digit hexadecimal code. We can modify the first line of HTML code. Okay, we are currently experiencing here table border is equals to 4, align is equals to right, BG color is equals to yellow. So what it will be, table border 4 हो जाएगा right side एंड बीजी कलर क्या होगा, उस टेबल का खाली बीजी कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर, जितने एरिया में आपका टेबल है उतना ही टेबल का आपका येलो आ जाएगा. बैकग्राउंड कंटेंट जो होंगे वो ब्लैक ही होंगे क्योंकि हमने फॉन्ट कलर नहीं चेंज किया. बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बॉर्डर्स आर डिस्प्लेड इन 2 shades of grey that creates 3-dimensional effect.
नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, अब हम बॉर्डर कलर चेंज कर रहे हैं. ओके, बीजी कलर नहीं, बॉर्डर कलर. द सिंटेक्स फॉर बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, टेबल बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू कलर नेम. कलर की जगह आप कलर नेम लिख सकते हैं. सो यू कैन सी हियर टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 10, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू ब्लू. सो यू मे सी चिल्ड्रन, बॉर्डर की साइज 10 और उसका कलर क्या है, ब्लू है. ये दो इन द स्क्रीन यू कैन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर प्लस ऑन अनदर टेबल इज़ ऑन नेटस्केप. तो दो डिफरेंट वेब ब्राउज़र पे ब्लू कलर के शेड्स आप देख सकते हैं. गॉट इट चिल्ड्रन? सेम वे वी कैन गिव द रो कलर, टेबल डेटा कलर, टेबल हेडर कलर. नाउ सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, द नेक्स्ट attribute. There are two attributes called cell padding and cell spacing, which you will use to adjust the white space in your table cell. White space, the empty space also. The cell spacing defines the width of the border, while cell padding represents the distance between the cell borders and the content within. You can see children, cell spacing, दोनों सेल्स के बीच की विथ आप बीच का एरिया आप देख सकते हैं कितना एम्प्टी है. एंड सेल पैडिंग में आप देख सकते हैं बच्चों, बोथ आर हैविंग द डिफरेंस. गॉट इट? डिफाइंस द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सेल, सेल स्पेसिंग, वेयर एज सेल पैडिंग डिफाइंस द एम्प्टी स्पेस अराउंड द सेल, सेल के चारों ओर. ये सेल के बीच में, सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच में, और सेल पैडिंग सेल के चारों ओर, बाहरी साइड. ओके. Cell padding attribute is used to create a space between the edges of a cell and its contents. The cell padding attributes pads some spaces. It leaves some spaces inside each wall of the cell of the table. You can see children, cell padding. Okay. Now, the cell padding attributes leave some space inside each wall of the cell of the table. The value can be specified either in pixel or as a percentage value. आप pixel में भी दे सकते हैं, उसे percentage में भी दे सकते हैं. Here the value specified in percentage refer to percentage of width of each cell of the table. We can see an example. Table border is equals to 4, align is equals to center, BG color means table का background color is equals to pink. Cell padding is equals to 25. We have given that 25 pixel. Same way नीचे यही example, border is equals to 4, align is equals to center, BG color यहाँ हमने येलो ले लिया, टेबल का बैकग्राउंड कलर. ओके, पूरे पेज का नहीं, टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो. सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू, अभी हमने परसेंट में दिया 20%. नेक्स्ट इट इज सेल स्पेसिंग. Again the same thing but in little bit detail with example. The cell spacing attribute is used to create a space between the cells of table. The amount of the space can be specified either in pixel or as a percentage value. Here the percentage is the percentage of width of each cell of the table, similar as it is, only the difference we are using cell spacing here. So cell spacing is equals to 20% or cell spacing is equals to 25. Both, one in percent, another in pixel. Okay, I hope you understood children. Example of cell spacing is given. See in this first image, head, title, table cells, title, head closed. हमने यहाँ पे head लिया है. अब in body tag we are using table. Cell spacing is equals to 15. Beginning में ही हमने दे दिया, टेबल शुरू कर रहे हैं, टेबल की सेल स्पेसिंग क्या है 15 और सेल पैडिंग को हमने बिल्कुल नील रखा है 0. और बीजी कलर बैकग्राउंड कलर इज रेड. यू कैन सी इन आउटपुट चिल्ड्रन, बैकग्राउंड ऑफ द टेबल ओनली इज रेड. TR, अब पहली रो, TD BG कलर इज इक्वल्स टू येलो. हम TD यानी टेबल डेटा यानी सेल का BG कलर क्या ले रहे हैं बच्चों, येलो. फर्स्ट, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, कंटेंट फर्स्ट, पहला TD क्लोज्ड. सिमिलरली TD BG कलर इज इक्वल्स टू येलो. आप यहाँ पे दूसरे टेबल डेटा का कलर ग्रीन भी ले सकते हैं, येलो, वाइट, ब्लू, जो भी लेना चाहें सेम कलर ले सकते हैं, जैसे यहाँ सेम है. सेकेंड, उधर हमने क्या लिखा, कंटेंट क्या दिए, सेकेंड. नाउ TD क्लोज्ड, TR क्लोज्ड, यानी कि 2 रो हमने ली, दोनों में हमने एक रो ली TR और TR क्लोज किया, पर हमने उसमें 2 TDs दिए. गॉट इट? 2 टेबल डेटास दिए, यानी कि एक ही रो के अंदर हमने सेल पैडिंग देते हुए 2 सेल्स बनाए. यू कैन सी सेल पैडिंग
both cells are having spaces between them. अब अगला BR is to what? Break. We are having next table cell spacing is equals to 0. अब cell spacing हमने 0 कर दी. पहले cell spacing 15 थी. Now cell spacing is 0. Cell padding हम कितना ले रहे हैं? 10. Similarly BG color yellow, border is equals to 1. ऊपर हमने border नहीं दिया. अब यहाँ हमने border दिया है 1 size का, 1 pixel size का. TR TD first, TD close second, same as it is the above. So you can see the output, children. Try this out. Okay, definitely you will enjoy this programming. Now come width attribute. The width attribute is used to specify the width of the table. The value as usual is given either in pixel or in percentage, available in space as follows. Table border 4, align center, BG color pink, cell spacing 25, frame means frame is equals to box, rules is equals to calls. Now width is equals to 50%. यहाँ 50% दिए है और नीचे के एग्जाम्पल में वी आर गिविंग ओनली 50, दैट इज पिक्सल साइज. टू सेट द विड्थ ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, add the width attribute to either the TD और TH tags. width attribute को हमेशा TD या TH tag के साथ यूज़ करें. The syntax is width is equals to value. Value can be expressed in pixel or percentage. With value of 30% displays a cell that is 30% of total width of the table. The height attribute can also be used in the TD और TH tag. height भी TD table data या table header के साथ यूज़ होता है to set the height of every individual cell. The height attribute is expressed either in pixel or a percentage. By now you must have learned the size of width, pixels, height, whatever, or width. We are cell padding or cell spacing, we are only giving either in percentage or in pixel size, right? If you include more text then can be displayed within that height value you specify. The cell expands to display the additional text. By default, a web browser places a table on the left margin of a web page with surrounding text placed above and below the table. Understood, children? By default ये left margin पे ही आता है table. To align in web browser में, to align a table with the surrounding text, use align attribute as align is equals to alignment. अब alignment क्या? अगर हमें table center लाना है तो table align is equals to center. We will give like that. So different 3 alignments are there: left, right or center. Left or right alignment places the table on a margin of web page and wraps surrounding text to the side. Center aligned will be table in the horizontal center of the page, okay, but does not allow the text to wrap around it. Same with the align attribute is similar to the align attribute used in the IMG tag, which we have done in 3rd chapter. By default cell text is placed in the middle of the cell. Okay, सेल के अंदर जो भी हम टेबल के अंदर जो सेल हैं, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है जो भी हम टाइप करते हैं या लिखते हैं वो हमेशा सेंटर में आता है बाय डिफ़ॉल्ट, मिडिल में. By using align and v-align attribute, we can specify the text horizontal and vertical placement. To align the text for a single column, we must apply the align attribute to every cell. फिर हमें हर सेल के लिए apply करना पड़ेगा. Align is equals to left, align is equals to v-align is equals to top. You can see your examples, children, in this image. Now table row tag, row tr, okay, is used to display the row in table. Everything appears within a tr tag that should appear on the same line. It can carry 3 attributes: align, border, v-align. Row align, that is row is aligned in as a specified manner. BG color, उस row का color यानी कि background color for selected row. V-align, उसकी vertical alignment of the contents of each cell in a row. Okay, children. Here example of background color आप देख सकते हैं output screen में we have given the color to our rows. Table border is equals to 1. In HTML programming you can see, children,
TH name of the player, TH name of the पॉइंट्स अर्नड। तो TH का मतलब टेबल हेडर। आउटपुट में आप देखें बच्चों, ऊपर सबसे टॉप टेबल की जो लाइन है दैट इज हेडर है। सो फॉर हेडर वी आर पुटिंग TH। ओके, पहली रो में हमने सिर्फ हेडर दिया, 2 हेडर दिए, सो 2 बार TH, पहली रो खत्म यानी TR खत्म। अब TR BG कलर इजिकल्स टू ग्रीन, पहली रो TR पहली रो, अब उस TR को हमने BG कलर दिया, कौन सा, लाइट ग्रीन। यू कैन सी उसमें टेबल डेटा डाला यानी 2 सेल्स बनाए, तो दैट इज TD दिशा, TD क्लोज, TD 110, TD क्लोज। सिमिलरली बाकी के 2 रोज भी हमने बनाए। बीच वाली रो को हमने वी हैव नॉट गिवन एनी कलर, सो नो BG कलर, सिंपली TR। लास्ट रो को हमने फिर से लाइट ग्रीन कलर दिया। आउटपुट यू कैन सी चिल्ड्रन, इस तरह से टेबल ख़त्म, TR ख़त्म, तो हमने TR क्लोज किया और टेबल क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज। Program is done. Make practice of this program also, children. Output, I hope you understood the output. Now table heading tag. HTML provides the TH tag for table headings. Text formatted with the TH tag is entered within the cell and displayed in a boldface font. The TH tag is most often used for column headings, but you can use it for any cell that you want to contain centered boldface text. Attributes of headings are given, children, just go through them. ABBR, that is abbreviated version of content of the cell. Align, so same way alignments. BG color you understood. Char, that manage the cell content aligned around in the first instance of the specified character. Okay, call span, that is number of the columns that cell spans across. Headers indicate corresponding headers. Height of the cell. No wrap, so we are no wrapping that it stop text from automatically from wrapping into a new line, so that is no wrap. Row span, it indicates number of rows, okay, that the cell span across. We align, specifies vertical alignment of the cell with specify width of the cell. Now we come to the nested table. Nested table, in image you can see table inside table. Yes, same way table के अंदर table create करना है. Okay, many times we need to add table within a table. The example shown over here. HTML body, caption tag is used, children, that dotted line, table border is equals to 4. अब caption में हम क्या लिख रहे हैं, heading में H1 conferences activity, H1 caption closed, TH closed. हेडर हम यूज़ करें इस रो में, इस TH में हम क्या देंगे, विथ उसकी 40% है और मॉर्निंग, TH क्लोज्ड। फिर दूसरा TH भी हम यूज़ करें टेबल हेडर, एक ही रो में दूसरा टेबल हेडिंग या टेबल हेडर, आफ्टरनून। अब रो फर्स्ट ख़त्म, TR क्लोज्ड। सेकेंड TR स्टार्ट्स विथ TH, उसका जो हेडर है डे 1। ओके, अब डे 1 में TD टेबल डेटा है, इनॉग्रेशन, की नोट एड्रेस, 2 TD यानी 2 सेल बनेंगे। We will see in the image. Day 2, अब डे 2 में हमने एक और TD दे दिया, डे 2 इज़ आवर टेबल हेडर। चिल्ड्रन यू कैन सी नए रो में पहला हेडर डे 2, सॉरी डे 1, फिर डे 2। सो दिस इज़ वॉट टेबल इनसाइड टेबल वी आर क्रिएटिंग। इन द थर्ड रो सेकेंड कॉलम वी हैव इनर टेबल, टीचर स्टूडेंट मीटिंग क्विज। सो दैट इज़ वहाँ हमने फिर से एक नया टेबल क्रिएट किया, टेबल बॉर्डर इजिकल्स टू 1, BG कलर पिंक, फ्रेम इज इक्वल्स टू बॉक्स एंड अलाइन इज इक्वल्स टू राइट। just have a look, children, and just go command wise, programming command wise, the table output reading, so you will understand it much better. Adding a caption to a table. To give name to a table, that is caption tag is used. This tag is required when you display a specific table along with the table name. Table name indicates what the table is for, or for a result purpose, for a timetable, or for a diet chart. Most of the browsers displays the contents of the caption above the table on a centered fashion. Okay, now fashion in the sense centered way. Addition of the following line before the first row of any valid HTML encoded table generates table caption as this is our timetable. ये कैप्शन है यानी उस
किसी भी टेबल के लिए, जो भी हम टेबल बना रहे हैं उसके लिए हम उसका एक टाइटल लिख देते हैं जो कैप्शन में आता है. सो दिस वे वी कैन राइट कैप्शन. You can see children, here we have written caption in this. This is our timetable. Caption starts with that dotted line, ending with that dotted line, but उसके बीच में we are writing caption H1 font color is equals to brown. हमने caption यानी caption का भी color ले लिया और this is our timetable. और font close के जो tag हम open करेंगे उन्हें close definitely करेंगे. So font close, H1 close and caption close. You can see this arrow is showing you the output of the table. Got it? Now HTML frame tag. Frame tag is used to divide up the display area of your browser into sections. Each section can display a different document. Haven't you seen those pages where you click on a link on the left side of the page and the document on the right side changes? Well, all the magic was done with frames. It can be used to segregate different parts of the screen, screen, example, heading, index, contents, and credits, etc. Frame is an HTML document is used to combine the multiple web pages and display them as a single web page. बच्चों, जब भी आप इंटरनेट ऑन करते हो तो आप स्क्रीन पे सिर्फ एक ही स्क्रीन नहीं देखते. यू आर सीइंग मल्टीपल. वन साइड advertisements are going on, another side news are going on, next side the what we can say the format of the page is like that. We are seeing multiple things on one screen. That is just because of frame. Frames divide a web browser window into several parts or sub windows, each containing an independent web page. By dividing the browser window in many frames, you can handle different HTML codes individually and manage loading and reloading of those pages or those parts of the program. A collection of frames in the web browser window is known as frame set. It is to be noted that some browsers do not support the frame set. To create the frame set document, first we have to create frame set element. Okay, frame set, that is a tag in angular bracket element which is treated as container of different frames. The frame set defines the division of browser window, and within the frame set each frame is represented by a frame and frame close tag pair. Here is an example given, children. You can see frame set rows is equal to 20%, 60%, 20%. So we are here defining 3 frames of web browser screen. पहला frame जो है top HTML, बीच second frame source जो है src is equals to main.html, third frame src is equals to bottom.html. In top you can see here the welcome to star group of hotels, ये पहला frame, second star restaurant दूसरा frame, तीसरा frame जो है सबसे नीचे thanks for visiting. So आप देख सकते हो the top frame is of 20%, middle frame is of 60% and last frame is of 20%. Note that it is also possible to divide the web browser window in vertical parts. ये था horizontal, we can divide it in vertical parts. So we may use frame set elements with columns as follows. Split the browser window vertically. Frame set calls is equals to 25%, 25%. Here we have tried to divide the browser window in 3 vertical parts. Change the code 20%, 60% and 20%. See, frame set calls is equals to 25%, middle one is asterisk and last one is 25%. पहला जो frame आएगा हमारे browser screen का वो 25%, last 25%, remaining is middle frame. Understood? आप इस तरह से भी दे सकते हैं. So children, in this way our chapter gets over. I hope you understood and enjoyed the learning. Please make the practice again. I say make practice of these HTML codings, HTML programs. You will definitely enjoy this programming and learn being at home even. So in this chapter we have seen different ways to create lists and tables in HTML. We have seen the ordered as well as unordered list. Different attributes, nested lists are introduced in this chapter. We learned to create simple tables as well as nested tables. The chapter has discussed attributes that can be applied to a whole table. Okay,
attribution for individual table, rows and attributes for individual cells. So this way children, our chapter gets over. See you in next chapter. Fine. Thank you for your attention children. Have a good day.